अब नींद का और वेट से संबंधित एक और वीडियो है, वो हम देख सकते हैं। अ, तो हमें पता चलेगा कि क्या संबंध है। In my last video, I featured a study that found that curtailing sleep can cut your rate of body fat loss in half while exacerbating the loss of lean mass. To get better insight into what was going on, researchers took fat and muscle biopsies from people after a night of sleep loss. In terms of genes that were turned on and off, molecular signatures were discovered suggesting muscle breakdown and fat buildup. That was after an all nighter, though. And in the weight loss study, the sleep restricted groups ended up getting little more than 5 hours a night. What about a more realistic scenario, like sleeping just 1 hour less a night? Overweight adults were randomized to 8 weeks. तो कह रहे हैं कि हमने अपनी पिछले वाले रिसर्च में देखा, वो वीडियो हमने अभी देखा था कि जिन लोगों को कम नींद मिलती थी, उन लोगों को जब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे डाला गया, तो उनका वेट तो लूज़ हुआ, लेकिन उन्होंने मसल लूज़ किया, ना कि फैट। जबकि जिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में नींद मिली, जब उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे डाला गया, तो उन्होंने जो वेट लॉस लूज़ किया, वो क्या था? मसल नहीं लूज़ की, उन्होंने एक्चुअली फैट लूज़ किया। यानी कि नींद पूरी लेंगे और आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फैट लूज़ करेंगे, और अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे और वेट लॉस कर रहे हैं, तो आप फैट नहीं, मसल लूज़ करेंगे। तो नींद बेहद ज़रूरी है, अगर आपको मोटापा भी कम करना है। तो उन्होंने कारण उसका ढूँढा, जब कारण ढूँढा तो पता चला कि एक्चुअली वो जीन्स ऑन हो जाती हैं, जो आपके फैट को बनाती हैं या फैट को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। Of a calorie restricted diet or the same diet combined with just 5 days a week of 1 hour a night less sleep. The sleep restricted group achieved the 1 hour a day less sleep on weekdays, but ended up sleeping an hour more on the weekend days. So overall, they just cut about 3 hours of sleep out of their week. Would just those few hours a week make any weight loss difference? On the scale, no. But in the normal sleep group, 80% of the weight loss was fat, whereas in the group just missing a few hours of sleep a week, it was the opposite. 80% of the loss was lean. देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा कि 2 ग्रुप लिए लोगों के और एक ग्रुप को पर्याप्त मात्रा में नींद दी गई, यानी कि रात को 7 से 8 घंटे उन्होंने नींद ली। दूसरे ग्रुप की 1 हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे नींद कम कर दी, पूरे हफ्ते में, यानी कि आधा घंटा कम कर दी हो जैसे। तो सिर्फ़ 3 घंटे कम कर दी। फिर दोनों ग्रुप्स को उन्होंने वेट लॉस प्रोग्राम पे डाला, यानी कि कैलोरीज़ उनके खाने में कम कर दी। तो क्या पाया? पहला ग्रुप जिसको पर्याप्त मात्रा में नींद मिल रही थी, जब उनका वेट लॉस जो था, वो 80% जो उनका वेट लॉस था, वो एक्चुअल फैट लॉस था। जबकि जिस ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 घंटे 1 हफ्ते में नींद कम कर दी गई थी, इस ग्रुप में जो फैट लॉस था, वो जो वेट लॉस था, वो फैट नहीं था, वो मसल लॉस था। तो 80% जो उन्होंने अपना वज़न कम किया, कम नींद वाले ग्रुप ने, उनका वज़न जो था वो फैट नहीं था, वो एक्चुअली मसल का लॉस था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में नींद लें, अगर हमें अपना वेट का भी संतुलन ठीक रखना है। This shows that a few hours of catch up sleep on the weekends is insufficient and may, in fact, be contributing to the problem based on the social jet lag effect I explored in a previous video. A comparable study was designed for kids, but the sleeping periods only lasted a week. 8 to 11-year-olds were randomized to either increase or decrease their time in bed by 1.5 hours per night for a week, then switch the following week. They ate an average of 134 calories more on the days they slept less and gained in that week about half a pound compared to the sleep more week. The question then becomes, would sleeping more facilitate weight loss? When it comes to body fat, can we just sleep it off?
हिरणमय भाई, आपका कैमरा ऑन है, अगर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो खत्म करके फिर आपसे बात करती हूँ, शायद 1 या 2 मिनट का रहता है। Benefit of interventional studies is you can demonstrate cause and effect, but observational studies can allow you to more easily track people and their behaviors over a longer time span. For example, researchers followed a group of mostly overweight individuals who started out averaging less than 6 hours of sleep a night for more than 5 years. During that time, about half maintained that schedule, but the other half increased their sleep duration up to 7 or 8 hours a night, ended up gaining 5 pounds less fat. A study entitled Sleeping Habits Predict the Magnitude of Fat Loss Among Those Cutting Calories found that every extra hour of sleep at night was associated with an extra 1.5 pounds of weight loss over a period of about 3 to 6 months. It's not the same as randomizing people to extra sleep, though. I mean, maybe they were sleeping more because they were exercising more, and that's the real reason they lost more weight. Getting people to bump their sleep from 5.5 hours up to 7 can lead to an overall decrease in appetite within 2 weeks, particularly for sugary and salty food. A 4 week study getting habitual short sleepers to sleep an extra hour at night led them to consume about 2 fewer spoonfuls of sugar a day compared to. तो उन्होंने पाया कि जो लोग पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, उनका जो बॉडी वेट है, वो 80% जो उनका वेट लॉस होगा, वो एक्चुअल फैट लॉस होगा। एक बात हमने देखी। दूसरी बात, ना सिर्फ उनका वेट लॉस जो होगा वो फैट के रूप में होगा, बल्कि उनकी जो क्रेविंग्स हैं जंक फूड की, एक्चुअली सॉल्टी एंड शुगरी फूड की जो क्रेविंग्स हैं उनकी, बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाएंगी। The control group, but this didn't translate into any changes in body composition. A 12-week study, on the other hand, randomized the overweight and obese individuals to a weight loss intervention with or without a sleep component, found that the sleep group lost weight significantly faster. A national cross sectional survey suggested lower obesity rates among kids in households that regularly ate dinner together as a family, got adequate sleep, and limited screen times. And so Harvard researchers decided to try to put those behaviors to the test. A 6 month randomized trial to improve household routines for obesity prevention among young children resulted in a lower BMI. Normally, it's hard to tease out the effects of multi component interventions, but in this case, exhortations to limit overall TV watching didn't work. And the families were already eating together 6 days a week, and so that didn't change much either. The only thing they were able to get the kids to significantly alter was their sleep. And so the improved weight outcomes may be attributed, at least in part, to the 3/4 of an hour average increase in nightly sleep. Overall, most sleep improvement interventions tended to show improved weight loss. I was intrigued to look up the one study that didn't. The nice thing about systematic reviews, as opposed to so. तो मेनली हमने देखा कि कैसे नींद बेटर हो और तो वेट लॉस जो है वो उसमें हमें मदद मिलती है।